Hey everyone, so this is Shashir, and I will be taking today's resource planning session. We are waiting for the users to get joined, and then after we will start at 3 p.m. Sure. We are waiting for other participants to join. We will start our session by 3 p.m. Yeah. So welcome everyone. आज हमारा सेशन ट्रांजैक्ट पे मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के अराउंड है। तो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली जो हमारा मॉड्यूल है वो एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे आपके प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल रहता है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को। सो हमारा जो आज का सेशन है दैट इज जस्ट फ्यू मोर पार्टिसिपेंट्स आर ज्वाइनिंग, लेट देम ज्वाइन। Yeah, so we'll start. सो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली जो हमारा मॉड्यूल है ये आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके प्रोक्योरमेंट में। वाइल आपका जब प्रोडक्शन प्रोसेस
रन हो रहा हो या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने के लिए एक एंटायर प्लानिंग जो प्रोक्योरमेंट की होती है, सो दैट जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली चले, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। सो वी विल गो अहेड एंड टेक ऑल द क्वेरीज, जितने भी क्वेरीज हैं वो हम आफ्टर द सेशन एक बार अटेंड करेंगे। सो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड हम जब एक बार पूरी ब्रीफिंग खत्म हो जाएगी वी विल गो अहेड विथ वन बाय वन विथ ऑल द क्वेरीज एंड देन आफ्टर वी विल एड्रेस देम। या सो गोइंग नेक्स्ट, जो आज के टॉपिक्स होंगे जो हम कवर Hello, करेंगे। sir. या Excuse me. यस मिस्टर लोकेश। Yes, sir. If it is English, it will be easy for us, sir. We know Hindi, sir. Not an issue. I will surely go ahead and start the entire session in English. Yes, sir. Thank Thank you. you. Yeah. So coming back to our today's session, so what topics we will be covering today? Importance and benefits of material resource planning module. Different ways of generating material resource planning report. As in material resource planning, just in term of report generation, we have provided three options. So I will go ahead and brief them. Inventory management through material resource planning. Now, what are the importance and benefits of material resource planning first of all? So the very first importance, in order to calculate what material is required and when an order can go into production. So suppose you have a manufacturing unit and some production processes are planned into that. Now in order to go ahead and take action on those production process, before that particular activity, you need to go ahead and check that the inventory is available, the stock of that raw material is available or not for running the production. Because suppose if I will go ahead and just plan any production and then have to push it on production floor, while doing the production I got to know that I don't have sufficient stock for that particular item. So at that point of time my entire production process will get stopped, and that will affect my sales and my customer experience as well. So where MRP helps you in proper planning, so that while doing the production, there should be no delay and the deliveries should go on time after production. Coming to the next, which is it forecasts your demand as well. So in material resource planning, you can very well go ahead and just check, like suppose in case of make to stock. So in case of make to stock, we don't have a production process, we don't have an order confirmation and order. We are just going ahead and planning that I need to just go ahead and create a production process for this much item, how much quantity would be required to run this particular production process. Now going next, which is the master process scheduling and the bill of material and inventory. What are the benefits of it? The benefits of it are better inventory control, improved scheduling, excellent customer service, and production planning. Why excellent customer service? Because if your production is happening on time, or you have already created some of the production processes, may in case of make to stock, and the stock is available with you on time, delivery is happening, and also in that way customer experience would be very great. So let me go on TranZact screen quickly. So let me share my TranZact screen first of all. Now, so this is our TranZact web page. On your left hand side, you will see resource planning module. Click on this. Now, I hope everyone have visited this part of module in resource planning. So in resource planning, as you can see that there are four options: basic material planning, order confirmation, expanded view, process detail, and finished good details. Now, in the very below, you will see MSL option, that is for the use case of minimum stock level, maximum stock level, which you define in your inventory. So let us start with the very first process, that is your basic material planning. So basic material planning report, this helps you in planning your procurement of material as per category. So as you can see that raw material, finished good, semi-finished good, electronic, but all the categories which are defined in your inventory, you can go ahead and check their stock and how much needed to be ordered. So this works on minimum stock level, maximum stock level feature. Suppose if
in raw material I have defined a minimum stock level, and that raw material is below my minimum stock level. So in that case, I can very well go ahead and run this report and can check that what are the raw materials which are below minimum stock level that need to be procured, and accordingly I can go ahead and make the planning. Now here I selected raw material just for example. Now you can go ahead and just select ignore item quantities blocked from production process. Suppose if these raw materials are already being used in any production process, so if they are into production process, by default they will come in the block quantity. That means that particular item stock is currently being used in a production process. So you can very well go ahead and make this selection, and accordingly all the production process, these raw material which will be available in production process will be ignored. And also the second option is show only items to be ordered. So this need to be selected as because currently you are going ahead and making a procurement planning for those items which need to be ordered. So I will go below and just generate report. So once I clicked on generate report, please check. It will fetch all my inventory items where order need to be placed. So as you can see that these are all my raw materials which are available in inventory and which is below my minimum stock level, so that I need to go ahead and just procure them. As you can see that in stock value is here and minimum stock value which is defined is here. So let me just brief you that exactly what this report is and how you can use this report. So the very first is your item details are available, your item ID, item name, and UM is available. Now, coming next, which is in stock. How much is currently in stock in your inventory? At what rate it is? Minimum stock value, which I mentioned that basic material resource planning mainly works on your minimum stock value, stock level. So, minimum stock level is defined for this item is 20, but currently the stock is 10. So, 10 I need to go ahead and procure in order to keep my material minimum stock level up to date. Yeah, I do hope that the report is visible here. Now, please check that as per the report in basic material planning, all the details is provided. As I mentioned that this particular report works with your minimum stock level. So in minimum stock level, if you can see here is my item list. The in stock value is provided here, and you can check the minimum stock level is also given. So as you can see in this report, 20 is my minimum stock level which I have defined, but in my inventory the stock is only 10. That means I need to procure more 10 in order to reach the minimum stock level, so that none of my production, ongoing production or next production can be affected, because that is the reason we have defined the minimum stock level, so that it should not go below the minimum stock level, and none of the work will get hampered. You can see all the list of raw materials. Currently I have, as I have selected the raw material category, so it will provide you all the raw material category items. Going to the next, which is block quantity. As I mentioned, the block quantity are those quantity which is blocked in any of the production processes. Suppose if any production process is created, for that this material is required, so that will come in the block quantity. Now, uh, here you will get total ordered as well. If any PO have been raised for this, you will see it in the total order. So please check here, 30 stock, 30 quantity have been already ordered. I will go next and will show you that exactly what next, what more details you can check in this. Total inward but QIR pending. That means the inward document is created, but QIR is pending. QIR document of those items is not created of that through that PO. So as you can see that I can get 101 quantity as well in the total QIR inward done, but QIR pending. Pending approval quantity. Pending approval quantity displays you like I have done the inward or QIR, but in my inventory, my approval is on manual, and my store person have not approved that uh, QIR or inward as per your selection. So in that case, it will show you in the pending approval quantity. Now, uh, going to the next, which is to be ordered. So pending approval quantity, as you can see, and to be ordered. So as let me just go ahead and brief you that exactly how this to be ordered is calculated. So my requirement was of in stock 10.
So 10 I needed to order to increase the minimum stock level, but my block quantity is currently 600. Block quantity is 600 as in it is required in the production process. Now currently my stock is only 10 and my pending approval quantity is 5 here. Now to be ordered quantity will take the entire sum of required quantity, then after the block quantity and pending approval quantity, and then after it will show you. So as by default it should have shown me the 10, but as because here it is blocked, so it is showing me to be ordered in 615. If you will go ahead and take an example of the next item here, please check. Let me quickly go ahead and just show you. It will be much more easier for you. So here in the item second, my current stock is 0. My minimum stock level is defined as 100. I don't have any block quantity or total ordered quantity or anything in the pending. So in that case, you can see to be ordered quantity is 100. I just need to go ahead and order 100, and accordingly my minimum stock level get matched. And also, so I just need to procure it at the on a quantity of 100. You will see the total price as well. This particular price comes from your previous purchase. Now, blocked in pending PO and QIR pending. This field displays you that where in which processes how much quantity is required. So as you can see that my PID 0005, PID 0012, these are created, and in the bracket you will see that how much quantity will be required in those PIDs. Pending PO, so these are the POs which are created, but none of the inward or GRN have happened. So currently only PO is created, but stock have not been inverted. This one is the for the GRN. So WR 0096 is inward, which is created, but QIR have not been done. That is the reason, as mentioned, there was a QIR pending. So you can see that for this inward, QIR is not created, and same is being displayed in the report. So you can very well go ahead and just download the report in Excel and can use it for your procurement. You can pass it on to your store team or your purchase team, and then after they can go ahead and place the order as per the requirement. So this is how you can use the basic material planning and procure your material and be updated with your minimum stock level, so that going forward you will not face any kind of issues related to the stock. I do hope this was very clear. Now coming to the next, which is our next report in resource planning. So let me switch my screen. Now, here we are back on our resource planning dashboard. Now, going next is the order confirmation report. So in resource planning, order confirmation segment is provided in order to go ahead and make the planning as per for the make to order. Like suppose I have got a order confirmation, I have got an order of one of my finished good. Now, I need to go ahead and just provide that finished good production process. So for that, either a production process will be created once it will go into the production team hand. Before that, through the order confirmation, you can also make your procurement planning. How you can do it? Suppose your production order is not yet started or not yet planned. Now, before that, I need to go ahead and make a planning of my procurement as per my order confirmation, my sales order. So here you need to select the order confirmation. I will quickly just go ahead and select one of my order confirmation, which is created. You can also go ahead and just select the store or creation date from to or delivery date from to of the order confirmation. Trading option is also provided. I will go ahead and just explain you what this trading option does. But first of all, let me go ahead and just select this order confirmation and generate report. Now, once I generated my order confirmation report, please check. So in my order confirmation, the finished good was available, and as my finished good does have a bill of material created, so this report will provide you all the raw material which will be used into for the production of that finished good. So this much item, I will just open the order confirmation as well, just for the visibility, so that it will be clear. Let me quickly go ahead and open the order confirmation. So please check. This was my order confirmation. Here I selected only globe valve.
which was one of my finished good. So I created a sales order for globe wall. Now I need to make a planning for the globe wall, the procurement planning for the globe wall production. So let me go back to my resource planning screen. Now here is the my these all material are the raw material which is mentioned in the bill of material of globe wall. Here you will get all the details like how much is in the stock, at what rate it is, how much quantity is required as per the bill of material. So this report and this entire detail mainly works as per your bill of material. If production process is not created, it's completely fine. But bill of material need to be get created in order to check the visibility of all the raw materials. Uh, so the required quantity is 250. Block quantity is 550. So block quantity is that quantity which is being used in another production. Total ordered, total inward, QIR pending, and pending approval quantity. So the columns which you are looking at are mostly same in all of the resource planning report. It's just that the data which is being provided to you for the visibility. Now you can, on your left hand side, you will see option of column selection. So in column selection, as you can see, that required by customer and blocked in. I can go ahead and select these columns, and now I will go in very right. Please check. It is required in OC 00095. By which customer it is required, for which customer this OC is created and blocked in. So the block quantity exactly in which, I'm really sorry, yeah, in which production process that my entire quantity is currently blocked. So as you check the 550, the block quantity, where exact in which processes it is blocked, you can get a entire display or an entire detailed view of your order confirmation material planning report. So through this, you can go ahead and just get this report, and accordingly, to be ordered column will be very much helpful to you for the purchase team, because those are the material where you need to go ahead and focus and just ask them to raise the purchase order. So this was related to order confirmation. Uh, if I go back in my resource planning module, so here is the process detail report. Same like order confirmation, if you have created a production process, either that is make to stock or a make to order, if the production process is created, then after you can very well go ahead and select the production process. You can very well select multiple production processes as well, and then go ahead and generate the report. One thing was in the order confirmation, that was the trading option. So let me show you exactly what trading option does. I selected OC 00095, same as earlier, and I selected my trading option below. Now I went ahead and clicked on generate report. Now let me show this screen. Please check. Earlier, you were getting all the raw materials which was being used in the as per the bill of material of global. But once I select the trading, it gives you only global option. It is not showing the raw materials which will be used. Difference between trading and normal material resource planning is, once you go ahead and unselect the trading option, it provides you the procurement as per the manufacturing unit. Like in manufacturing unit, as per procurement, main part is the raw material. But once I select the trading, it only gives you the finished good, that how much you need to procure in order to make the sell. So it is just through from one way it is coming, and from another way it is going. So this is how our trading option in resource planning work. I'm going back to my resource planning dashboard. Next, let us come to our finished good details. Finished good details report is mainly used for, as I mentioned in our slide, that you can very well go ahead and make the planning, or very well go ahead and check how you can the forecast demand. Like suppose there is one of my finished good which is a very quick selling product, and I keep it in stock. So suppose that finished good stock is going low, and as per my report, I check that I currently go ahead and need to create 25 quantity more finished good. So how I can go ahead and make a planning for this? In that planning, finished good will be helpful to you. So here you can select the material code, material name. Now let me just type my material. So glow bulb is one of my product which I'm going ahead and planning.
You need to go ahead and select the BOM name or BOM number. This report will only get generated if bill of material is available. You can select one product, one finished good at one time only. So I will select one of my bill of material, that is BOM 00024. All the, if suppose for any finished good, if there are multiple bill of material created, the same will come in the drop down. I need to provide the quantity, that for how much I am planning for the procurement. So currently I am checking the report for manufacturing globe wall for 25 quantity. You can go ahead and use the store selection to check as per the store. I will click on generate report. So once the report got generated, please check. Here are all the raw materials which are available as per the bill of material. Give you a visibility. Just a moment. Yeah. Now it will give you a visibility that to manufacture 25 globe valve, how much raw material will be required, currently what is in the stock, at what rate it is available, how much is blocked in another production processes, how much is total ordered, QIR pending and pending approval quantity, and how much you need to be ordered, and what will be the total price. You can very well go ahead and make this selection in the column on your left hand side, very top corner, and can check again the remaining detail, that where it is required, where it is blocked, how how much pending PO is there, or QIR pending in, and barcode is also provided. If you have assigned any barcode on the item, same will come, or the production same will come in the resource planning report as well. So this is how you can go ahead and use your resource planning in order to plan your procurement, so that your store person will be notified about the current purchases, and accordingly they will communicate it to the purchase team, and the purchase order should be placed and stock will be maintained. So let me go back to my screen. Yeah. So as I mentioned, that different ways of generating MRP report are: very first is basic material planning, second is order confirmation, process detail, and finished good details. So in all the four ways, you can very well go ahead and just plan your procurement. The very first, basic material planning procurement, will be helpful to you in order to make procurement as per the category. Order confirmation will help you uh, in case the you have just provided order confirmation and you need to plan for the production of that particular order confirmation. Process details, if any production process have been planned, but the procurement planning have not been done, you can use the process details report, and then after you can go ahead and plan your procurement. Finished good details will provide you a visibility, a forecasting of your procurement for some of the quantity of finished good. So this was all a entire display of resource planning from my end. Now you can go ahead and raise your hand, and if there are any queries, we will go ahead and just address it. So yeah, so I have got few of chats as well. Let me quickly go ahead and just read it loud. So the very first, we are really sorry, Miss Sonam, we saw your message a little late related to Hindi. No issues. I will quickly go ahead and just explain it back in Hindi. Yeah. So let me go back to the to my resource planning screen. So जैसा कि रिसोर्स प्लानिंग मॉड्यूल हमारे ट्रांजैक्ट में प्रोवाइड किया है, तो இல்ல ये அவன் आप போட்டபடியே போட்டபடியே இருக்கட்டும். அவரு ஜிஆர்என் போட்டபடியே போட்டேன். ஏன்னா அவனை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். சரி, ஓகே. हेलो அதுக்கப்புறமா சொல்லிக்கலாம். இத சொல்லும்போது நீங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு செஷன் கூட கொடுக்கும்போது मैम இம்பார்ட்டன்ட் ஒட்டுக்கா ஒரே பிஓவா போட சொல்லி அங்கிருந்து ஆர்எஃப்கியூ கிரியேட் பண்ணாம ஓகே. அங்கிருந்து ஜிஆர்என் மட்டும் போட சொல்லிக்கலாம். मैम कैन यू हियर मी போட்டு அதை நான் கொட்டேஷன் ஆக்கி கொட்டேஷன்ல இருந்து ப்ராசஸ் விட்டுட்டு या सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि रिसोर्स प्लानिंग मॉड्यूल जो हमारा है वो आपको मेनली हेल्प करता है आपके प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग एज इन कि एक कंपनी, बीइंग अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके लिए आपका रॉ मटेरियल सबसे वैल्यूएबल होता है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्शन में भी यूज होता है। अब एक
सीमलेस विदाउट एनी इशू प्रोडक्शन रन करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल की स्टॉक हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके लिए हमने अपने इन्वेंट्री में ऑप्शन दिया हुआ है मिनिमम स्टॉक लेवल का। तो मिनिमम स्टॉक लेवल जब आप डिफाइन कर देंगे उस अकॉर्डिंग दैट मींस कि आपका जस्ट मोमेंट क्या सो मिनिमम स्टॉक लेवल डिफाइन करने का सबसे अच्छा यूज केस ये होता है कि आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरे कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि मेरे मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जा चुके हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर उनकी रिक्वायरमेंट हुई तो वहां पे चीजें स्टक हो जाएंगी। तो उस केस में आपको रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है टू गो अहेड एंड प्लान द प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले आपका बेसिक मटेरियल प्लानिंग होता है। बेसिक मटेरियल प्लानिंग में आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं एंड रिपोर्ट देख सकते हैं कि अभी जैसे रॉ मटेरियल कैटेगरी में कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे चले गए हैं जो कि हमें ऑर्डर करना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में रॉ मटेरियल सेलेक्ट करके एंड जनरेट रिपोर्ट किया। तो जनरेट रिपोर्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी मेरे रॉ मटेरियल्स हैं जो लिस्टेड हैं वो आ गए जो कि मेरे मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे हैं। तो यहाँ पे इन स्टॉक का कॉलम है, आप देखेंगे यहाँ पे दैट इन स्टॉक इज 0, मिनिमम स्टॉक लेवल जो उसका डिफाइन किया हुआ है दैट इज 100, ब्लॉक क्वांटिटी 0, बाकी कहीं भी ये ब्लॉक नहीं है। टू बी ऑर्डर्ड में आप देखेंगे तो 100 होगा। तो ये कभी भी जो कैलकुलेशन आपका टू बी ऑर्डर्ड का होता है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। आई मीन टू बी रिक्वायर्ड से जो भी आपका अभी ब्लॉक है एंड आपका यहाँ पे बेसिकली इनवर्ट क्यूआर पेंडिंग या अप्रूवल पेंडिंग में अगर है तो उसको कैलकुलेशन करके एंड देन आफ्टर फिर ये आपको टू बी ऑर्डर्ड क्वांटिटी दिखाता है। आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करके देख सकते हैं दैट ये कहाँ पे ब्लॉक्ड है, कौन से पीओ पेंडिंग है एंड ऑल्सो कितने कौन से क्यूआईआर पेंडिंग है। इन्वर्ट बन गया है बट क्यूआईआर नहीं बना हुआ है। तो इस वे में आप अपने रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं सो दैट गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस आपके पास आता भी है तो आपका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन प्रोसेस डिफाइन करने के टाइम में आपके पास रॉ मटेरियल की स्टॉक कम ना हो। मैं वापस आता हूं दूसरे रिपोर्ट पे। सो सेकेंड रिपोर्ट इज ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर कंफर्मेशन रिपोर्ट आपको हेल्प करता है कि सपोज आपका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं बना हुआ है बट ऑर्डर कंफर्मेशन आपने रिलीज कर दिया है। तो अब ऑर्डर कंफर्मेशन रिलीज करने के बाद आपको एक विजिबिलिटी चाहिए टू प्लान द प्रोडक्शन कि अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है, कि मैं प्रोडक्शन प्लान कर सकता हूं या नहीं। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू गो एंड प्लान द प्रोडक्शन। सो मेरा ऑर्डर कंफर्मेशन एक राइट टाइम पे डिलीवर हो जाए, फॉर दैट आपको ऑर्डर कंफर्मेशन रिपोर्ट हेल्प करता है। सो सपोज यहाँ पे मैंने ऑर्डर कंफर्मेशन सेलेक्ट किया जो कि एक मैंने बनाया हुआ है ग्लोब वॉल्व के लिए एंड यहाँ पे मैंने सिंपली जनरेट रिपोर्ट किया। तो जब मैं जनरेट रिपोर्ट करूंगा तो ग्लोब वॉल्व मेरे ऑर्डर कंफर्मेशन में है दैट इज फिनिश्ड गुड। मेरे प्रोडक्शन मॉड्यूल में ग्लोब वॉल्व के लिए बिल ऑफ मटेरियल मैंने बना रखा हुआ है। तो बिल ऑफ मटेरियल में जो भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल आ गए हुए हैं अलॉन्ग विथ स्टॉक, कितने रिक्वायर्ड हैं, ब्लॉक क्वांटिटी अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में वही सेम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और वो प्रोडक्शन प्रोसेस अभी ओपन है प्रोडक्शन फ्लोर पे तो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे ब्लॉक क्वांटिटी में दिखाएगी। नाउ गोइंग नेक्स्ट, कितने आपको ऑर्डर करने हैं। ऑलवेज रिमेंबर जब आप रिसोर्स प्लानिंग रिपोर्ट देख रहे होंगे फॉर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, टू बी ऑर्डर्ड कॉलम जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वहां से आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली अभी पीओ कितने का प्लेस होना चाहिए। एंड वेरी वेल जैसा मैंने आपको प्रीवियस रिपोर्ट में दिखाया कि जैसे ही वो पीओ प्लेस हो जाएगा उस क्वांटिटी के अगेंस्ट उस आइटम के लिए तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में पीओ क्रिएटेड में आ जाएगा। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो कॉलम सिलेक्शन का ऑप्शन है। आप वेरी वेल अपने अकॉर्डिंग कॉलम सिलेक्शन कर सकते हैं एंड देन आफ्टर देख सकते हैं रिपोर्ट एंटायर डिटेल में। डाउनलोड, आप रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं एंड वेरी वेल इंटरनली यूज भी कर सकते हैं। कमिंग बैक, नेक्स्ट इज प्रोसेस डिटेल एंड फिनिश गुड डिटेल्स। सो प्रोसेस डिटेल आपको हेल्प करता है प्लानिंग में। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट हो गया है बट अभी वो लाइव नहीं हुआ है उसके लिए अब प्रोक्योरमेंट करना है तो एक विजिबिलिटी कि कैसे उस कितना उस प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है एंड किस किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एंड अभी वो किस क्वांटिटी में मेरे पास है, ये विजिबिलिटी आपको प्रोसेस डिटेल रिपोर्ट दे देता है। आप यहाँ पे प्रोसेस नंबर सेलेक्ट करके ड्राफ्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। क्रिएशन फ्रॉम क्रिएशन टू फिल्टर जो है वो आपको हेल्प करेगा। सपोज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट मुझे देखना है कि मेरे कितने प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे हैं जो इस डेट से इस डेट में क्रिएटेड हैं और उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। सेम आपका
ऑर्डर कंफर्मेशन भी जाता है, इस डेट से इस डेट में कितने ऑर्डर कंफर्मेशन क्रिएटेड है जिसकी प्लानिंग मुझे करनी है। गोइंग बिलो फिनिश गुड डिटेल रिपोर्ट, फिनिश गुड डिटेल रिपोर्ट आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए हेल्प करेगा। लाइक सपोज एक मेरा आइटम है जो कि बहुत ही ज्यादा सेल होता है मेरा, वो मतलब मैं ऑर्डर आने पे नहीं बनाता हूँ, मैं पहले से बना के रखता हूँ। अब अभी उसकी मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने में मेरी क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, कितना क्वांटिटी अभी स्टॉक में है, कितना मुझे प्रोक्योरमेंट के लिए भेजना होगा, ये सारा डिटेल आपको फिनिश गुड डिटेल से मिल जाएगा। सो आई होप अभी हिंदी में ये चीजें क्लियर होंगी। सो आप लोगों के जो भी क्वेरीज या डाउट हैं प्लीज हमारे साथ एक बार बताएं, सो दैट मैं यू कैन क्लिक ऑन रेज हैंड हियर। सो आई हैव गॉट मिस्टर निमेश ने रेज हैंड किया है, सो मिस्टर निमेश यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और अपना क्वेरी मुझे बता सकते हैं। Yeah, hi. This finished good details. If my product is having multiple child bombs, then it should be able to show that that particular small child part is also available in stock, but it doesn't show up. So Okay. how do you check that? Okay. So basically, as per you saying, if I'm just going ahead and generating the globe world resource, the finished good, I selected the globe world, and if there are any child BOM which are attached in my globe wall, so that is not being currently displayed into your resource planning. I mean, finished good details report. Am I right? Yes, right. Not an issue, Mr. Nimesh. Mr. Nimesh, can I get connected with you over a call just after this session? And can surely get connected to any desk and just check this once. Yeah, sure, no problem. Thank you, Mr. Nimesh. Thank you. Yeah, please, Mr. Lokesh ने raise hand किया था. Mr. Lokesh, you can unmute yourself and just let us know your query. Roll stocks. Up, can we create PO and tax invoice in backdate? We are really sorry, but PO and tax invoice creation in backdated is not available on TranZact as of now. Okay, hi. Actually, Mr. Nimesh has asked one question, and the same issue I also do have. So please get in touch with me also after this call. For sure, for sure. And yeah, we can discuss some more point on the call if we get connected after this. For sure, I will surely get connected with you over a call, and then after we will discuss it. Can you please drop your number as well in the chat box, Yeah. so that it will be very much handy for me in order to get connected. Yeah, where can I get a list of process number? Yeah, यहाँ पे फिनिश गुड्स के ऊपर आई थिंक प्रोसेस डिटेल्स देखने के लिए Right. उसमें दो फील्ड्स हैं, क्या दोनों डालने पड़ते हैं उसमें? तो यहाँ पे आप प्रोसेस डिटेल में जब आएंगे तो आपको ओनली प्रोसेस नंबर रिक्वायर्ड होगा, विच इज जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जब आप क्रिएट करते हैं तो हर प्रोडक्शन प्रोसेस का एक प्रोडक्शन आईडी क्रिएट होता है। सो दैट प्रोडक्शन आईडी इज योर प्रोसेस नंबर। तो आप केवल प्रोसेस नंबर जो है वो सेलेक्ट करके, लाइक सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, दिस पीआईडी प्रोसेस नंबर तो याद नहीं होता है, लाइक वी व्हाट वी रिमेम्बर कि हमारा एक प्रोडक्ट है लाइक ग्लोब वॉल्व। अब ग्लोब वॉल्व के 4-5 जगह के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, तो पर्टिकुलरली इफ द कंसाइनी इज लाइक हैदराबाद, तो उनके जो ऑर्डर है उनका स्टेटस मुझे देखने के लिए उनका पीआईडी तो मुझे याद नहीं होगा, प्रोसेस नंबर, ओसी नंबर और डेट, ओसी नंबर और डेट, ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर, उनका पीओ नंबर हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जो ऑर्डर उन्होंने हमें दिया है वहां से ट्रेसिंग हो सकती है क्या? तो ट्रांजैक्ट पे बेसिकली जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास किसी हैदराबाद की पार्टी ने आपको कुछ ऑर्डर्स दिए हैं ग्लोब वॉल्व के, राइट? अब उनके प्रोसेसेस क्रिएट हो गए हुए हैं, ठीक है, नॉट कंप्लीटेड, क्रिएट हो गए हुए हैं। नाउ आप यहाँ पे देखिए जो फिल्टर हमने दिया हुआ है, या तो आप डॉक्यूमेंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सिस्टम नीड सम इन्फो टू गो एंड सर्च इट, राइट? सो या तो आप डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपके पास ओसी नंबर हो या फिर आपको पता हो कि पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट में मुझे चेक करना है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं।
अगर आप प्रोसेस डिटेल में आएंगे तो सेम गोइंग, अगर आपको प्रोसेस नंबर पता है तो वेरी वेल आप प्रोसेस नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से क्रिएशन डेट, प्रोसेस के क्रिएशन डेट और क्रिएशन फ्रॉम और टू का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड चेक। Okay. Right. Yeah. So So in that case, we will have to keep a list of process numbers associated with a particular order we receive, and then only now we can track that. सो अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर प्रोसेस, तो अभी आप जैसे इन विच वे यू गो अहेड एंड क्रिएट द प्रोसेस करंटली, जैसे आपके पास एक ऑर्डर आया, राइट? हमारे पास एक्चुअली रेलवे से ऑर्डर्स आते हैं, तो ठीक है, रेलवे से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनके पीओ को हम लोग बुक कर लेते हैं, वो हमारे लिए सेल्स ऑर्डर हो जाता है। ठीक है। तो वो सेल्स ऑर्डर का जो अब हम प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं, तो ओके, लाइक पर्टिकुलर वन आइटम इज हैविंग 3 to 4 सेल्स ऑर्डर। तो पर्टिकुलरली हमें अगर सदर्न रेलवे का कोई ऑर्डर है वो ट्रैक करना है, तो हमें उनका पीओ नंबर हमारे पास होता है, तो उससे हम उनका ट्रैकिंग कर सकते हैं। बट क्योंकि इसमें एक स्टेप आपको और लेना पड़ेगा विच इज थ्रू द रिपोर्ट्स। ओके, तो इसमें डायरेक्टली आप रिसोर्स प्लानिंग से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी जो है आपको ट्रैकिंग करनी है, राइट? यस, कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, हाँ करेक्ट? हाँ, तो दैट कैन बी डन फ्रॉम द रिपोर्ट्स मॉड्यूल। ओके, करेंटली वी आर ऑन रिसोर्स प्लानिंग, ये आपके प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में हेल्प करेगी। दिस इज फॉर द प्लानिंग टू चेक द ओके, स्टेटस एंड रिमेनिंग डिटेल। आपको रिपोर्ट मॉड्यूल में जाना होगा। रिपोर्ट ओके, मॉड्यूल में आपको फिर आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोसेस डिटेल आइटम वाइज रिपोर्ट टू बी स्पेसिफिक, वहां से आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन का भी क्या स्टेटस है। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे रिपोर्ट मॉड्यूल में आपका प्रोडक्शन में जाना है, प्रोसेस डिटेल आइटम वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा, आप यहाँ से उसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको ऑर्डर की ट्रैकिंग देखनी है तो वेरी वेल फिर आप सेल्स ऑर्डर रजिस्टर से देख सकते हैं। सेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन सेल्स ऑर्डर रजिस्टर रिपोर्ट आपको मिलेगा, आप यहाँ से उसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं। सेम आप ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। या Mr. Mukesh, you can unmute yourself and can ask your query. मिस्टर मुकेश, आप अपने आप को अनम्यूट करके एंड देन अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड आई कैन लुक इनटू दैट। सो प्लीज रेज योर हैंड, हियर इज अ ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन है रेज हैंड का। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। Hot delivery bags, India Mart, we can't hear the sound. So is this happening with everyone? Can you please check your am I audible now? Yeah, thanks, Mr. Monit, for confirming. Sir, you can just type, Mr. Ashish, you can unmute yourself and please raise your query. Am I audible? Yes, yes, you are audible. My query is regarding different companies. In fact, I'm applying for a channel partner kind of a discussion. So, MRP is different in different companies. Like some companies consider something to be considered or not considered. Now, how do we take care of those parameters in the ER? Can you please, Mr. Ashish, can you please brief a little, like with any one of the example, that what to be considered, to be not considered? Like, for example, WIP stock or child part, as someone mentioned, then bought out parts or consumables to be considered or not considered. That must have been provided a category into that, right? Okay.
So that's what I'm asking. That basically, if that is a bought out part or if that is a consumable, not consumable, right? So in that case, you must have defined a category onto that, correct? So what categories are considered and what are not considered is my question. Okay, so basically, if I go around the resource planning module in order confirmation, process detail, and finished good details report, there is no such thing like category consideration. It will take as per Okay. the bill of material or as per the process. So mainly it works along with the bill of material. Now come towards the very first, that is the basic material planning. In basic material planning, you can very well go ahead and make the selection as per your category, and then after can check this. Which means all categories are considered, or in the basic? In the basic, you can make the selection of categories. Let me show you. Okay. So Okay. here is While the defining basic the BOM material. itself, I can do the selection to be considered or not to be No, considered no, in no, the no, resource. no. Basic material planning doesn't work with your BOM. As I mentioned, that it works as per your inventory category. It doesn't Okay. work as per your BUM. And now, if I talk about the order confirmation, process detail, and finished good details, so here all of the categories, whatever is available in the BUM, will come. There is no such thing where you can very well go ahead and define that that should not be considered in the resource planning. As like, Perfect. let me just give you an example. So there are Perfect. multiple consumable parts which are used in a production process, but people don't keep them in the BOM, right? So Okay. while generating the report, they can only make a procurement list of those items which is available in BOM. They may not be able to go ahead and get a entire report of the consumable. For consumable, they need to go in the basic material planning, and then after there they can select and check as per the minimum stock level. Perfect. Perfect. And Yeah. on the PO's front also, let's say there is a PO which has been issued for which the material have not got. Will Mhm. that be accounted for? So system will, if the PO is created, let me show you. If a PO is created for any of the item, but inward Yes. have not been done, material have Yes. not arrived, right? Yes. Like, let me show you. As you can see, this is the PO number, all right? In this, Yes. PO have been created for this item, but inward have not happened. So it will Yes. Yes. consider in the report that for 30 quantity, the PO have been raised, but no other document have been created. So will that be added in the to be ordered, or No, no, this will not come in the to be this will ordered. not come in No, 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 this will not there? come in to be Right. ordered. Right. Please. And as Mr. As you mentioned that the child bill of material parts, right? So basically, as mentioned that in finished good resource planning, the child BOM, how it is linked, and the child BOM is not getting covered. So for that, I just mentioned that let me connect with them over a call, and then after I will go ahead and just have a look over any response. We'll do that. All right. I'll put in my number also in the Yes, sir, text message. that would be great. Thank I you. will surely share the webinar recording on mail as well, Mr. Amit. Yes. Yes. That's required. I mentioned that. Yes. Okay. Mr. Shabarish, you can unmute yourself and can please raise your query. लाइक एक पर्टिकुलर आइटम को ट्रांसफर करने का टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया तो 3-4 सेम आइटम को और अप्रूव नहीं होने के पहले सेम आइटम को 3-4 बार में ट्रांसफर करने से उधर बैलेंस ऑटोमेटिक माइनस में चला जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सो अभी आपका इन्वेंट्री माइनस में चला जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए, राइट? राइट। तो देखिए, अब फर्स्ट इज कि वो इन्वेंट्री माइनस में क्यों जा रहा है, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, अब वेरिएबल स्टॉक नहीं होने के टाइम में भी उसकी मूवमेंट की गई होगी, तो वो माइनस में जा सकता है। दैट कुड बी वन रीजन। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उसको आप स्टॉप कैसे कर सकते हैं। सो यू नीड टू गो इन सेटिंग्स मॉड्यूल। यहाँ सेटिंग्स मॉड्यूल में जब आप जाएंगे, इन इन्वेंट्री सेगमेंट देयर इज अ नेगेटिव स्टॉक रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन। So you can see here stock transfer restriction for document, for production, each and everything there is a restriction. So if I will turn on this stock transfer restriction once, तो अगर मैं इसको stock transfer restriction को turn on कर देता हूँ, तो उसके बाद let me share this tab. Yeah, I hope आपको दिख रहा होगा मेरा screen, right? Yes, sir. So settings module में आप आएंगे, settings module में जाने के बाद you need to go in inventory. इन्वेंट्री सेगमेंट में हियर इज द नेगेटिव स्टॉक रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन ऑन करना होगा। उसके बाद
जब भी आपका स्टॉक नेगेटिव में जा रहा होगा तो वो आपको नेक्स्ट एक्शन लेने नहीं देगा. तो through this you can very well go ahead and maintain and manage the negative stock restriction. नहीं, मेरा कहने का मतलब सर वो नहीं है. मैं एक पर्टिकुलर आइटम कोड को 3-4 वार्कलर नंबर में, सपोज मेरे पास एक आइटम कोड 100 नंबर्स इन्वेंटरी में अवेलेबल है. ठीक है. मैं वो सेपरेट वार्कलर में मैं उसको पोस्ट करता हूँ, मेन स्टॉक स्टोर से प्रोडक्शन स्टॉक स्टोर को. अभी 2 वार्कलर में मैं 50-50 ऑलरेडी ट्रांसफर किया हूँ, उसका अप्रूव नहीं हुआ, पेंडिंग में. ठीक है. नेक्स्ट फिर मैं और एक ऑर्डर में फिर 50 नंबर मार देने से मेरा इन्वेंटरी में टोटल 100 है, लेकिन मैं ट्रांसफर किया हूँ 150 नंबर से. लेकिन वो टाइप में मेरे को शो करना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा इन्वेंटरी में 100 नंबर है, तुम ऑलरेडी 100 नंबर से ट्रांसफर कर दिया हूँ, ऑलरेडी उसमें पेंडिंग है डॉक्यूमेंट. रिमेनिंग 50 नंबर अभी जो नेक्स्ट वर्क ऑर्डर में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बैलेंस में चला जाए, वो क्योंकि मेरा हो गया. Okay, so correct me if I am wrong. So आपकी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, वार्निंग है, जो कि सिस्टम वाइज आना चाहिए अगर कोई भी ऐसा पेंडिंग है तो, राइट? यस. ओके. तो सर कैन यू प्लीज एक बार आप सपोर्ट चैट रेज कर सकते हैं क्या इसके रिलेटेड? दे विल श्योरली गो अहेड एंड रेज अ फीचर रिक्वेस्ट फॉर द सेम. आप यहाँ देख रहे होंगे गेट हेल्प का ऑप्शन है आपके ट्रांजैक्ट में, यहाँ गेट हेल्प का ऑप्शन आ रहा होगा. प्लीज रेज अ सपोर्ट चैट फ्रॉम हियर and we will surely go ahead and understand the exact use case requirement and we will raise a feature request. Yeah, Mr. Monit, please you can unmute yourself and ask your query. Yeah, thanks, Shishir. मेरा question था regarding the BOM. In some of our products, what is happening? Basically, our products is made in a batch. It's not a standard product. So, like we make rubber sheets. So for that, we have a specific recipe that we have to follow. Right. So we have a batch of say 70 kgs. So BOM has to be for a 70 kg batch. आपके BOM में आप खाली 1 डाल सकते हैं. 1 के बेसिस पे हम लोग को पूरा करना पड़ता है, राइट? राइट. 1 के बेसिस पे आपको वहाँ डिफाइन करना होता है ना, अकॉर्डिंगली आपके प्रोसेस में वो मल्टीप्लाई होता है. Right. So is there a batch process that I can adopt to for my purpose? मतलब 70 kg का batch है, तो for 70 kg what do I need to do? उसके हिसाब से मुझे बॉम्ब डालना है. Is there something like that I can do or? Yes, तो उसमें एक काम कर सकते हैं आप कि अभी जैसे बिल ऑफ मटेरियल क्रिएशन है, राइट? तो उसमें बाय डिफॉल्ट आप डिफाइन 1 के लिए करेंगे, बट जैसे ही आप वहां पे ऊपर में जो फिनिश्ड गुड क्वांटिटी है, तो आपके पास जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगी, राइट, रॉ मटेरियल डिफाइनिंग होगी, वो एज पर 70 kg के बैच के लिए होगी, करेक्ट? ओके. तो वहां पे आप ऊपर में फिनिश गुड में 70 kg डाल सकते हैं एंड नीचे में उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की डेफिनेशन डाल दीजिए, मतलब व्हिच रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड एंड Acha, okay. Great. So that was one question. The second is that ये जो seminars आपने किए for resource planning is quite helpful. Similar, do you plan to have more seminars like that for the other modules, because there is a lot of things that all of us can explore, but ज़्यादा पता नहीं होता है, so we don't really get into it. So next, so Monit, we have started this and we are in fact planning it कि अभी week on week and month on month हम ज़्यादा से ज़्यादा seminars and webinars करें. So for sure you would be get updated through the email for the registration. Please join and we will be there to assist you. Also, Mr. Monit, which I mentioned कि आप वहाँ पे 70 kg जो डालेंगे, so 70 kg का जैसे ही आप bill of material save करेंगे, bill of material आपका 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा एंड रॉ मटेरियल भी आपका 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा. Okay. तो आपको वहां पे मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम विल डू द कैलकुलेशन. Okay, got it. Thanks. Yeah, welcome. Mr. What you're saying is a multi-level bomb kind of. Sorry? I'm sorry. Do you mean to say there is a multi-level bomb where the batch of 70 kg will get converted into the raw material as per the recipe? No. So basically,
मिस्टर मोनित wanted to ask कि अभी जैसे हमारा बिल ऑफ मटेरियल जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज पर 1 FG क्वांटिटी, राइट? जहां पे अगर आपके पास 70 बैचेस का रेसिपी है तो आपको मैनुअली कैलकुलेशन करके एंड देन आफ्टर 1 kg के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। बट इन सिस्टम देयर इज अ फीचर जहां पे आप फिनिश गुड में 70 kg डाल सकते हैं एंड नीचे में 70 kg के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, क्वांटिटी डाल दीजिए। वंस यू विल सेव इट, system will automatically make it as per the one. So that's Which why. means batch. Batch. ठीक, got it. Thank you. Mr. Mukesh, you can also unmute yourself and can ask your query. Yes, Mr. Mukesh. Hi, sir. Hi. Sir, mainly we are the manufacturer of machines. Mhm. For the manufacturing, we are using two more models cylinders. Mhm. Okay, product is cylinder. We are Mhm. using two more purchases from different suppliers. Mhm. Can we manage in inventory? We are showing okay, but how can we manage in production planning? So I'm really sorry, but that was a little bit. So is it possible that we can get connected in order to understand and check the entire? Because as you mentioned that currently you are in the cylinder manufacturing, right? And BOM must have been defined for that. No. Hello, can you hear me, ma'am? Sir, from Can you hear three. me? Hello. Yeah, can you hear me, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. I'm asking that can we get connected over a separate call in order to understand the process which you are following and how the resource planning will be helpful to you. Sir, in inventory, we are showing each and every part, okay, every cylinder. Mhm. When we are planning for production planning, Uh-huh. which inventory is in stock we are using? How can it plan for more than 2-3 suppliers at a time? So are you using the production module as well? Yes, sir. Yes, sir. On paid So, basis, we are using. so here, please have it. So can you see the finished good details? Okay. So in finished good details report, you can very well go ahead and plan for any of the material. Like, let me show you. Like suppose I went ahead and just check. Suppose I selected one of my item. All right. Yes. BOM is created of this material. So what I will do, I will just select the BOM. Now from 2 or 3 supplier, I have got a visibility that it will be required in 50 quantity. Okay. Okay. I will simply go ahead and type 50 here and generate the report. Or if uh, I have raised the order confirmations to the buyers, here you can go ahead and select the order, multiple order confirmation and can make the planning. Please check. Here I can go ahead and just select the multiple order confirmation and then after you can go ahead and generate the report. And it will display you the requirement as per the order confirmation. Please check here. Okay, sir. Okay. Ma'am, if the provided explanation or the query resolution was not clear, please let us know. Or you can also reach us over support chat. You can ask for Shishir and I will get connected over a call in order to explain it. Sure, sure. Okay, sir. Thank you for confirmation. Welcome. So, is there anything else or any another query which I can go ahead and just help you with? So, as it look like that none of the queries are there. So, can we go ahead and just conclude this session? And thank you for joining. And we will surely meet you soon with another exciting webinar around any feature. Around any feature. Welcome, Mr. Monith. So, see you all in our next webinar. Till the time, if you face any of the query or issue, please reach us on our support chat. We will be there to assist you. Have a great day ahead. Bye for now. Thank you for joining.